Okay, so start now. So as you're aware, today is going to be the demo session for MCSA, right? Where actually we are going to learn about servers, okay? How to work on servers, how to create a domain controller, how to create a DHCP server, how to create a web server, right? So multiple things are there which we are going to learn in MCSA, right? So let me clear you one thing that certification is not available on Microsoft as such, right? It is expired in 2022, right? But still, what we need to do, we have to get the information of the servers. We have to get the knowledge of servers. Okay, so if I'm talking about the new technologies like Intunes or SCCM or Office 365. So in order to work with this these technology also, we have to be very handy on servers. You must have the knowledge of servers, then only we will be able to understand the concept of SCCM and then the Office 365 Exchange server, right? So that is why even for cloud also. Now let's suppose if you are going for Azure or if you are going for AWS. So over there also you have to configure the operating system, Windows operating system. Rahmat, can you please mute yourself? Time whenever you want to unmute, you can do. Just for now, I'm just give an introduction, right? Later on, you can just put on your queries. So I was talking about that if I want to work on Intunes, or if I want to work on SCCM, Office 365, Cloud, Azure, AWS, whatever, right? So in that case, we should have the knowledge of servers, then only we will be able to work on it, right? So that is why the knowledge is still there. We have to get the knowledge of servers. Certification is not there, no problem. But if we are even going for Azure 104 or AWS, right? So that means if you are going to certify Azure 104, that means you have the knowledge of servers. It specifies that you have the knowledge of servers. Okay. Now, see, I have around 7 years of experience in cloud as well as on-prem data center, right? So based on the scenarios, based on my past experiences, on my current experiences, right? What I will try to deliver is how companies are working onto the servers, how companies are configuring their infrastructure, how companies are configuring their file server, how they are configuring high availability of their file servers. That is basically called as failover cluster. Okay, so based on the real scenario, based on the real cases, right, we are going to work on servers, right, and we are going to get the knowledge of each and every topic. Okay, now do you have any query regarding this course? First of all, anyone? यस सर, एक्चुअली बुक्स रिगार्डिंग जैसे बुक्स क्या क्या टॉपिक होंगे, क्या क्या उसमें हमें पढ़ाया जाएगा, नॉर्मली उसके रिगार्डिंग मुझे थोड़ा सा चाहिए था। Okay, so Harish, what I will do now, ओके I'm going to give you a book of 2016 MCSA 2016. ओके Okay, ओके so whatever the topics are there in that book, we are going to cover all the topics. And even I prepared one Excel sheet so that we guys can even you can track on the topics, that what and all topics we have covered. Okay, so I'll show you the topics list and all, don't worry. Okay, yeah. Yes, Ajay, you can unmute yourself. Good evening, sir. Hi, good evening. Sir, my question is that I have no any knowledge of Windows Server. So you will start from basic. From very scratch, from very zero, right? Okay. From the Okay. IP addressing scheme, from there I'm going to start. Okay. Okay. Or sir, this class will be bilingual language or English, sir. It depends on the, like, if we have some students from overseas, then in that case it would be in English. But if, let's suppose, if you all are from India, then in that case we can go ahead with the Hindi as well. Okay. Okay.
I can ask query in Hindi, sir. Yeah, anytime. But what I would recommend is, see, in industries, whenever you are going for the interview, right? So in that case, they are going to ask the questions in English, right? So you have to be, Yes, sir. just speak wrong, don't worry, right? Yes, sir. Speak wrong, but try to speak in English, okay? Because it Yes, is yes. going to help Sure, you sir. in real time also, in your interviews also, okay? Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so what I will do, first of all, let me share the topics, right? That what topics we are going to cover under this, right? So I prepared one Excel sheet basically, right, where actually I used to track all the topics, right, for all the topics that my previous batches I have covered, right, or even my current batches, if let's suppose it is running, then in that case I used to track with this. Okay, so these are the topics that we are going to cover. First of all, introduction to MCSA, obviously what and all things we can do, how we can create our labs. So this we will talk about. Okay, then in order to do all these labs, so as I told you, I'm not going to cover theoretical part, right? Whatever topics I'm going to cover, that are purely based on practicals, purely based on labs, so that you guys will be aware of. Let's suppose if you are going for any of the interview, and any interviewer will ask how to create a domain controller, what is primary domain controller, how I can check whether the server is a primary domain or a child domain controller, how I can find it out. So in that case, you should have the practical knowledge, not the theoretical, right? So whatever the topics mentioned in this list, everything is based on labs, practicals. Okay. So in order to configure our labs, we have to create the virtual machine, VMs, right? And to create the virtual machines, we have different options available. We have different, basically you can say hypervisors available that we can download and we can configure the lab. Just for example, we have Hyper-V, we have VMware, and then we have VirtualBox. Okay, now depends on you what hypervisor you want to use, right? So mostly I'm going to work on VMware, but wherever it is needed, I'm going to show you how you guys can create the virtual machines on Hyper-V also. Because see, whenever you are applying for the interview, so in that case, it is mentioned in the job profile that you should have knowledge of Hyper-V and VMware. Okay, so you will get the knowledge of that tool also, how to use that tool, how to manage that tools, how to manage what VMs in that tools, how to migrate the VMs onto one tool to different, how to take the backups, right? So we have multiple things available, multiple softwares available. For example, VMware and then Hyper-V, right? So this is VMware. It is available on the VMware website. You can just download it in your laptops, okay? And you can create your virtual machines over there, right? Now, in order to create the virtual machines, so these virtual machines also needed the hard disk, the CPU, the RAM, everything is needed. So from where it is going to take? It is going to take all these things from the base system. So now it also depends what kind of configuration you have in your laptop, right? So if you have around 12 GB RAM or 8 GB RAM, then I would recommend you to go with your own laptops, to configure the labs in your own laptops. Okay, if you don't have, in that case, we have multiple options. Either you can use the networking labs or you can go with the Azure also. You can configure the servers on Azure also. Okay, so whenever I'm going to create a virtual machine in VMware or Hyper-V or VirtualBox, so they are going to use the compute power from my base system. That means based on the configuration that I have in my laptop, I will be able to assign the RAM size, I will be able to assign the virtual CPUs, I will be able to assign the hard disk. Now, if I'm going on the settings of this virtual machine,
So here you can see memory, I have assigned 2 GB memory to it. I have 12 GB in my laptops, but I assigned 2 GB. 2 GB is more than enough to configure our labs, right? Then I assign the processor also, then hard disk also, then from where I am going to install the operating system. So either I can install from the ISO, or we can install the operating system through network also. In real time, in companies, you are going to install the operating system in your new laptops from network. No need to use ISO images or the USB, bootable USBs. We can directly do, we can directly install the ISOs, the operating system from our network, right? Now the network adapter, obviously, if we want, the machines will be these virtual machines I have created, right? So if I want, these machines will be able to communicate with each other, they will be able to talk to each other, then in that case, I need to assign the network adapter also, right? See, we are connected. Even you guys are able to use internet on your laptops. So obviously, it is through network only. It is through network adapter only. On your network adapter, you are getting the IP from your ISP. That is why you are able to connect. Same way, if I want these machines will be able to talk to each other, then in that case, I need to assign one network as also. So it will create, so it is not a dedicated network that we need to connect with all the machines. What it will do, we have one network adapter in our base system, in our laptop. So it is going to virtualize that network adapter in a way that whenever I want to create a virtual machine, I can just attach the network adapter onto the VMs. And it is mandatory to do, right? Because without network adapter, you will not be able to join the machines into your domain, or you will not be able to make a domain controller or whatever the services you are running on the server. Without network adapter, that server will not be able to distribute that particular service which is running onto that. Okay, so network adapter is also mandatory. Okay, now I'll take your queries. Okay, first let me complete and then I'll take your queries. After this, so this is not a class, basically this is just a demo session where actually we are getting that what and all topics we are going to cover, right? I'll be explaining each and everything to non-IT. If let's suppose you are from non-IT background, then in that case also I will explain in a way like you will be able to understand. Okay, now types of DC domain controllers. So DCs are basically, you can say, the backbone of your organization. Whatever the policies you are going to make, how you are going to manage your users, how you are going to manage your laptops, or how you are going to manage your network printers also. So everything we can do under domain controllers, DCs, right? And DCs are basically of 4 types. Primary domain controller, that is PDC, additional domain controller, that is additional domain controller, ADC, then CDC, child domain controller, and read only domain controller, that is RODC. Now, depending upon the requirement of organization, depending upon the traffic we have in the organization, based on that, we can select the ADC, CDC, or RODC. PDC is mandatory. Primary domain controller is always mandatory to configure in the environment. For any of the organization, if you're talking, then in that case, PDC is mandatory to configure. We have to configure it. And then we can proceed with the other ones, ADC, CDC, RODC, etc. Okay. Now, Active Directory, AD. This is also the major part where actually you are going to configure your users, your organizational units, OUs. Okay, ADs also we are going to cover. Then domain and OU delegation. So for now, whatever the users we are going to create, so one person should have the access to do it, should have the privileges to do it, right? But obviously that one person will not going to be available 24/7.
then in that case, what we need to do, we have to give some delegate control to other users also. This is how actually companies work. Now let's suppose I have 15 team members in my IT team and I am the administrator. I am the domain administrator. Means I have full control on my domain, but I want the other users will not be having the full control. They can just do some some particular task. Means they can just create the users, or they can just reset their passwords. Okay, so that is actually called domain and OU delegation. For the delegation, either we can give the delegation based on domain, or we can give the delegation based on OU also. Depends on scenario, right? Then the RSET, remote server administration tools. Okay, if let's suppose you don't want to connect server every time. I have configured primary domain controller, right? But I don't want to connect that primary domain controller server every time. So what I can do, I can just install RSET tool in my laptop, in my company's laptop, and then no need to connect primary domain controller. I can manage my users, groups, security groups, policies, everything, whatever you can do in your PDC, the same thing you will be able to do on your Windows 10 laptop or Windows 11 laptop with the help of RSET tool. Okay. Now group policy. So group policy is basically a central way through which I can manage thousands of devices. I want the users will not be able to do any kind of changes into the laptop, which is the part of domain. I can do this from group policy. I want the user will not be able to read pen drive on their systems. Means if they are going to connect the USB on the laptop, right? In that case, I can block them to read the data of pen drive, because sometime it may possible the users will the user can share the confidential information. They can copy the confidential information in their pen drives. So in 90% organization, you will not be able to read the pen drives on your laptop. You can connect, right? Because obviously there is a USB port where actually we can connect, but you will not be able to read the data which is actually available onto that USB. So this we can do with the help of group policy. And multiple things. You want to do the software installation. Now let's suppose there is a requirement from one user that they want Google Chrome, Office 365, right? So that also I can manage through the group policy. Okay, and there are thousands of templates available in the group policy itself. Now depending on the requirement of my organization, I can just go with the particular templates and I can create the policies, right? Then AD, administrative center, it is also the updated version of Active Directory. Means we will be able to see multiple features here, right? Then DHCP, dynamic host configuration protocol, how to assign the IPs to your devices automatically. See, now you are connected with your home network, with your broadband, let's suppose. So on each system that is connected to that broadband, you are getting one IP. And that is why you're able to use internet onto that machines or on your mobiles, right? So actually in your router, DHCP is configured. So that DHCP is actually distributing the IPs to your devices. ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे आपके स्कोप कॉन्फ़िगर्ड है, आईपी के स्कोप कॉन्फ़िगर्ड है, जिन स्कोप में से आपके मोबाइल्स को या फिर आपके लैपटॉप्स को आईपी मिल रहा है, एंड देन आईपी मिलने के बाद आप उसको इंटरनेट पे एक्सेस कर पा रहे हो, आप इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हो उन डिवाइसेस पे. So that is with the help of DHCP, right? Then we have DHCP failover. If let's suppose DHCP goes down, obviously we are going to configure it on any hardware, right? Or in, let's suppose on any VM. Let's suppose there is some issue with that VM.
or let's suppose there is some issue with that hardware. So how my clients will be able to get the IPs? So they can get if if I'm going to configure DHCP failover. What it will do when DHCP goes down, this failover server automatically it will get up and it will start distributing the IPs to your client systems, right? Then we have DHCP relay agent. What it will do? Now there are different IP range available. There are different IP ranges are available, right? That is class A, class B, and class C. Class A, class B, class C, right? So now let's suppose I want to configure the scope. So what is scope actually? See, scope is if I am talking about the DHCP, right? In that case, in order to configure the DHCP, I need to configure the scope. Scope will be the range of IPs that can be distributed to the devices. एक रेंज में डिफाइन कर दूंगा तो उन्हीं उसी रेंज में से आईपी असाइन होगा आपके क्लाइंट मशीन्स को. नाउ लेट्स सपोज I created a scope that starts from 1.100 to 192.168.1.200. So what will happen is, in that case, if I'm going to configure this scope, then the devices will be able to get the IP within that scope only. Means I will be able to assign the IP to 101 devices. Okay, and within this range only, IP is going to be distributed on each and every device. Right. So this is a range of class C. This is class C IP address. Right. Now let's suppose I want to create a class A range also that starts from, just for example, 10.0.0.1 to 10.0.0.255. So in order to distribute the IPs from both these scopes, I need to configure the relay agent. So relay agent will do the distribution of IP of class A as well as of class C. Now it depends on the scenario. It depends on the request from the device that from actually we are getting the request. So based on that request, my relay agent is going to distribute the IP of class A and the IP of class C. It totally depends that from which device I'm getting the request, from which network I'm getting the request. Okay, so this how it works. We are going to configure that. Okay. Now FTP, file transfer protocol, this is actually widely used in the organization. So as I told, USB is blocked every time on the system. 90% in organization, you will be able to see that you will not be able to read the pen drives on the systems. So how you can transfer the data? Let's suppose you want to transfer some data. So how you can do it? So in that case, we can use FTP, file transfer protocol. Or we can configure network drive also, that is some different thing. But in this case, if I want to transfer the data from office 1 to office 2 in a secured way, right? So in that case, I can do this with the help of FTP. Means if I want to transfer the data from Noida to Chandigarh, or Noida to Delhi, or Noida to Mumbai, so what I can do, I can configure FTP. So what it will do, it is going to send the data in a secured form, so that if any hacker is there, so he will not be able to track the activity that what you are actually doing, what actually in that packet is. ठीक है, तो जो hacker होगा, he will not be able to understand. Okay, because now the connection is in a secured form. Okay, in a encrypted form, right? Then web server. So you have seen we are able to access Amazon.com, we are able to access networkings, right? Multiple things, like you can take the example. Let's suppose if I'm going to networkings, NW Kings. So this website
is actually hosted on a server, on a web server. Okay, so how to host this website, how to make the website highly available for all the users. So in that case, we are going to first of all configure web server, and then we have the second option, that is network load balancing, NLB. Because see, now let's suppose I hosted a website on a web server which is having 8 GB RAM, 2 virtual CPUs, right? So it has its compute power, right? So based on that compute power, that web server is able to get the request, and the web server will be able to respond to the queries of the users. Means, if let's suppose, let me create a diagram. So first of all, what and all topics we are going to cover, right? First of all, we will understand the like how it is working, what is the concept behind it, right? First of all, we will understand the basic things about that, and then we are going to configure it. Okay, so like we have the multiple like softwares over there, we can just draw our diagrams. Okay, so now let's suppose I created one web server. So just say this is my web server. Onto this networking website is hosted, right? And number of peoples like you, me, we are just sending the request to this web server, and based on our request, we are able to see the website on our browser, right? But now let's suppose it is configured with 8 GB RAM, just for example. Okay, maybe in actual it will be having a huge RAM, right? I'm just taking example. 8 GB RAM, 2 virtual CPU. So based on the configuration this hardware has, on which my website is hosted, the users will be able to reach to this website. Multiple users will be able to reach to this website. Or let's suppose now thousands of peoples are actually trying to reach to my website. So in that case, what will happen? Based on the configuration is available onto the hardware, at a certain point of time, it will not be able to respond to the queries. We will get some error like server is not responding. Or maybe if you have experience, like whenever there is a result like class 10 result or class 12th result, so mostly we used to get the error that server is not responding. Why? Because at that time, number of students are trying to get, or number of students are hitting that website, CBSE website or any of the board website. And that is why, based on the configuration onto that machine, at a certain point, it will start, or it will not be able to serve the result. So for that, what we need to do, we have to configure the network load balancing. So obviously, see, just think in a logical way, right? Let's suppose I hosted one website onto it. If let's suppose there is some there is something went wrong with this server, if the server is not available, there is some hardware issue, then how my users will be able to reach to my website? So we should have a backup. We should have the backup. Means we have to configure multiple web servers, so that if any of the server will get down, if let's suppose this server will get down, then this server will start distributing the services. This server will start distributing the services. Now, same way, if this will get down, then this will start distributing the services to my users. So this network load balancing, basically, we can add maximum 32 servers in a cluster. In a cluster, we can add 32 servers.
So what it is actually making sure that my website is always available for the users. Even let's suppose everything is working fine. No, none of the server is failed or it is working, right? But now number of requests are getting onto this server. So what it will do at a certain point, it will start, my NLB load balancer will start distributing the request to second server. Faisal, cluster is just a box, you can say, just a container. Under that container, I can add 32 servers. Okay. So in that container, I can add 32 servers. So what it will do, if let's suppose number of users are hitting to my website, right? So what it will do, it will start sending the request to second server and it will balance their load. Likewise, if this server is also overloaded, then it will share the load with third server, and so on. We can add 32 servers. Practically 32 servers are not needed. So what I have seen in my previous like companies and all, so I think 6 or 8 servers are more than enough to configure the network load balancing. हाँ अरुण, सो अरुण मैं क्या समझा रहा हूँ कि मुझे अपनी वेबसाइट को हाईली अवेलेबल कराना है। अब देखो, चलो मैं आपको एक लाइव टाइम एग्जांपल देता हूँ। हम मैचेस देखते हैं, हॉटस्टार पे मैचेस देखते हैं, या आजकल जियो पे मैचेस आ रहे हैं, जियो सिनेमा पे मैचेस हो रहे हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया है वहां पे अराउंड 20 लाख लोग, 50 लाख लोग मैचेस देख रहे हैं? तो ऑब्वियसली हॉटस्टार भी तो किसी सर्वर पे ही होस्टेड होगा, बट वो होस्ट जहां पे वो होस्टेड है, राइट, वहां पे 50 लाख लोग उस सर्वर को हिट कर रहे हैं। तो इसका भी तो एक कंप्यूट पावर है, इसका भी तो एक कॉन्फ़िगरेशन है, उसी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही वो उन रिक्वेस्ट को रिस्पोंड कर सकता है। ठीक है, तो अब 1 लाख यूजर मान लो मेरे इस सर्वर को हिट कर रहे हैं, अब उसके बाद इसने बोल दिया कि नहीं भाई, मैं आई एम नॉट कैपेबल, मैं नहीं सर्व कर सकता अब रिक्वेस्ट को। तो क्या होगा, उसके लिए मुझे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, जैसे ही इस पे ओवरलोड बढ़ रहा है, जैसे ये ओवरलोड हो रहा है, तो ये अपना लोड शेयर कर लेगा दूसरे सर्वर के साथ। ठीक है, अब दोनों आपस में लोड शेयर कर रहे हैं और लोड शेयर करके 2 लाख यूजर्स इन सर्वर्स को एक्सेस, मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हैं। नाउ अब 2 लाख से भी ऊपर मेरे यूजर्स आ गए, फिर क्या करूं? उसके लिए फिर मुझे एक और सर्वर ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो क्या होगा, वो तीनों सर्वर्स आपस में लोड शेयर करेंगे और मेरे जो वो मैच देख पा रहे हैं, वो एनी विदाउट एनी इंटरप्शन दे विल बी एबल टू वॉच द मैच। एनी कंफ्यूजन? Hello, sir. Yes, please. Is it good to have many servers in a cluster or have only few with high specifications? Yes, that is also fine. If you can afford, if your company can afford, so you can just go for the high specification as well. No worries. Is it bad or good to have many servers in a cluster? That is my question. Mahesh, it depends totally. No, there is no bad thing. Cluster is meant for the load balancing also. Cluster is meant to add 32 servers itself. Okay, Oh, so there is no bad or good thing. It totally depends how your company सर can ये work खुद on it. से डिसाइड कर लेंगे ना कितना शेयर किस पे करना है सर। Arunam, you're हेलो barely audible to me. Can you please speak again? Can you speak again, Arun? सर हाँ सर सर Yes, please. मेरा हाँ सर आज मेरा फर्स्ट ही है, सुन पा रहे सर? मेरा फर्स्ट क्लास है। हाँ हाँ।
तो ये बैच बैच फर्स्ट ही स्टार्ट हुआ है क्या सर? अभी क्लास आज से हमारी ही? स्टार्ट नहीं हुई है अरुण, अभी सिर्फ हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। क्लास जो हमारी स्टार्ट होगी वो मंडे से स्टार्ट होगी। ओके, ओके सर, दिस इज जस्ट अ डेमो ओके सेशन। सर। तो सर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेगा ना? हाँ डिपेंड्स, बिल्कुल दोनों में चलेंगे। क्योंकि हम हिंदी के लिए ही तो फिर बोले कि नहीं सर दोनों में बताएंगे। श्योर श्योर श्योर, इट विल बी बाय लैंग्वेज, डोंट वरी, आई विल, मैं हिंदी में भी समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। ठीक है सर। और सर अभी जैसे आपने बताया कि 3 सर्वर है, तीनों ये लोड शेयर खुद ऑटो वो कर लेगा कि उसको कुछ कमांड कुछ ऑटोमेटिकली देना पड़ेगा? ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना आपको, ये काम करेगा आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर, जो आप क्लस्टर कॉन्फ़िगर करोगे वो काम करेगा ये, इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ओके सर। ठीक है। सर क्या ठीक है मैं पूछ सकता हूँ क्या? या प्लीज प्लीज गो ऑन ना। सो ये एक क्लस्टर में हम एक ही सर्वर होस्ट कर सकते हैं या वेरिएबल यानी डिफरेंट डिफरेंट 32 सर्वर्स होस्ट कर सकते सर्वर्स, 32 हैं? डिफरेंट सर्वर 32 डिफरेंट सर्वर्स एक 32 क्लस्टर में। different servers, exactly. ओके Either it can be a virtual machine or it can be a hardware. Okay, so we can add अंडरस्टूड। 32 servers. ओके थैंक यू। Yeah. Sir, what is cluster, sir? Cluster is basically a container, a box under which I am adding 32 servers. Container means, sir, अगर in मतलब Okay, let me explain. अच्छा ये देखो, देखो मैंने क्या किया, मैंने एक क्लस्टर बना दिया, ठीक है। अब क्लस्टर के अंदर क्या होगा, मैं अपने सर्वर्स ऐड करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 and so on, I can add 32 servers, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हर सर्वर पे मेरी ये सेम वेबसाइट होस्टेड होगी, हर सर्वर पे, ठीक है। अब जो मेरे यूजर हिट करेंगे वो पर्टिकुलर किसी सर्वर को हिट ना करके मेरे क्लस्टर को हिट करेंगे, क्लस्टर के पास भी अपना एक आईपी होगा, we are going to assign one IP to cluster as well. Let's suppose the cluster is running with 192.168.1.20, just for example. So अब जो मेरी जो यूजर्स हिट करेंगे वो पर्टिकुलर, क्योंकि देखो ये सारे सर्वर्स हैं राइट, इन सर्वर्स पे भी आईपी होना जरूरी है। अब किसी पे 192.168.1.1 होगा, 2 3 4 सो ऑन राइट, किसी पे 4 होगा, 2 for example, right, 2 and then 3. So each server has its own IP, but as I created one container, so my customers, my users are not going to hit the particular IP, so they are going to hit the 1.20, ठीक है। अब उसके बाद मेरे क्लस्टर का काम है कि कौन से सर्वर से वो रिस्पोंड करवाएगा, ठीक है। मतलब अगर ये सर्वर ओवरलोड हो गया तो वो रिस्पोंड करवा देगा इस सर्वर से, यहाँ पे मैं अपनी प्रायोरिटी सेट करूंगा। जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे एट दैट टाइम वी विल गेट वन ऑप्शन टू कॉन्फ़िगर द प्रायोरिटी। लेट्स सपोज मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी इस सर्वर के लिए P1, तो हमेशा जब भी कस्टमर पिंग करेगा मेरे क्लस्टर को, ठीक है, तो रिस्पॉन्स हमेशा 1.1 करेगा, ठीक है। बट अब लेट्स सपोज ये सर्वर डाउन हो गया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं प्रायोरिटी 2 सेट कर दूंगा किसी और सर्वर पे। लेट्स सपोज इस पे मैंने प्रायोरिटी 2 सेट कर दिया, अगर ये सर्वर कभी रिस्पोंड नहीं कर पाएगा तो ये सर्वर रिस्पोंड करना स्टार्ट कर देगा, ये नहीं कर पाएगा तो मैं इसकी, लेट्स सपोज मैंने इसकी प्रायोरिटी 3 सेट कर दी, इसकी प्रायोरिटी 4 सेट कर दी, 5 6 7 8 लाइक दिस। तो ये काम सारा क्लस्टर का है, आपको कुछ नहीं करना, ये सब ऑटोमेटिक स्विच हो जाएगा आपस में। गॉट इट? ओके सर, जो क्लस्टर के अंदर 32 सर्वर रहेंगे, ये हाँ, फिजिकली अलग अलग रहेंगे सर, या एक वर्चुअल मशीन के अंदर 32 अलग अलग क्रिएट होंगे? यही मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि ये फिजिकल सर्वर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती हैं, ओके गेटिंग?
ये फिजिकल हार्डवेयर भी हो सकता है आपका, और ये वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती है जो मल्टीपल हार्डवेयर पे कॉन्फ़िगर्ड है, ये भी हो सकता है। ओके ठीक है, सर, क्लस्टर को जैसे VMware की तरह एक सॉफ्टवेयर माने या क्या माने, मतलब जो क्लस्टर जिसके अंदर 32 सर्वर होस्ट हो गए? no, it is not a software basically, it is just a, you can say it is just a service which is actually managing your web servers. ओके सर, इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे 32 सर्वर को मिला के मैंने एक क्लस्टर बना लिया। एग्जैक्टली, ओके ठीक है। और क्लस्टर क्या कर रहा है, मेरी वेबसाइट की हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहा है ना, ओके, कि अगर कोई सर्वर डाउन भी हो रहा है स्टिल मेरे कस्टमर्स मेरी वेबसाइट तक पहुंच पा रहे हैं। रिलायबिलिटी सर। रिलायबिलिटी, अच्छा मैं एग्जांपल देखो, हॉटस्टार पे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, राइट, 2 करोड़ लोग देख रहे होते हैं मैच को, यस सर। उन्होंने कैसे मैनेज किया इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, right? So what they did, they configured the high availability as well as they configured the load balancing also, कि अगर कोई एक सर्वर, ऑब्वियसली हाई कंप्यूट तो होगा ही उनके ऊपर, बट अगर 2 करोड़ यूजर देख रहे हैं तो कैन यू मैनेज, कैन यू इमेजिन बेसिकली कि मेरे को कितना अच्छा इंफ्रा चाहिए होगा, राइट? So this is the example also where you can relate it. Okay, Hello, sir. yes please. So this server has to be in one network or they can be at different locations? Yes, if they are in the different location, then we have to make sure it should be available, it should communicate with each other, we have to configure routing. Okay. Okay, Okay, thank you. it can be on another location also, means now just take one more example. Let's suppose I configure this cluster in Delhi location, in Delhi data center, अब वो data center ही down हो गया पूरा, फ्लड आ गया, भूकंप आ गया, राइट? तो अब क्या मेरी वेबसाइट तक पहुंच नहीं पाएंगे लोग? पहुंच सकते हैं। क्या करना है मुझे, इस क्लस्टर में मैं 2-4 सर्वर्स ऐसे ऐड कर दूंगा जो मेरे ऑफिस की किसी दूसरे लोकेशन पे पड़े होंगे, right? So Okay. we can just take the examples, and based on the examples, obviously whenever, see, this is just what I'm trying to explain is, this is just a demo, right? It is just I am going to show you in the diagrams, right? But when we are going to configure it practically, then also you will get the clear picture of it. Okay, okay, so now, Yes, sir. Good evening. yeah, hi, good evening. Yes, sir. My name is Sushant, sir. Today it is my first class Mhm. of this MCSA, sir. So I want to ask one doubt. Mhm. Means, sir, what is the concept of relay PC? So can you Relay explain agent. this? Yes, yes. Relay PC. Because in my bank, means I am working in means HDFC Bank as an IT Mhm. engineer. So Mhm. here, what is the means role? Means what they have configured? Means there is relay PC through which means there are several printers here in one bank. So Mhm. means many of the printers have been connected ओके ओके through that particular machine. हाँ Mhm. Yes, yes. Instead of this server, means still we are having the server, but due to some issue, so means they have configured right now this relay PC. So can you sir explain means what is the behind it, the logic? Okay, so relay PC is basically what it is doing, or what I'm trying to understand from you is, see, relay PC is, you can say it is a kind of jump server. Okay, Okay. so from that PC you will be able to connect, first of all, or it may happen like, let me try to explain in the diagram. Okay, now let's suppose, let me take the example of servers. So that PC you are are you connecting it through outside your network also? Means we are having means router also there, switches also there, but what we say means single means connectivity is coming to this PC means relay PC, which And is then giving all the devices are connected, right? then all the devices are connected through that relay PC. Got it, got it, got it, got it. Okay, got it. This is just a kind of jump server basically. Okay, so jump server is what, if I need to connect to my whole infrastructure. Now let's suppose this is my relay PC,
Okay, and in my term it is called as jump server. Okay, so now let's suppose there are multiple servers are running behind it. Multiple servers are running behind it. So if I need to reach to these servers, so this server is actually connected with all the systems of my environment. So if I want to connect to these servers directly, I will not be able to connect it. Directly, let's suppose this is my laptop. This is my laptop, right? And I need to connect these servers. Let's suppose this is my file server, this is my web server, this is my domain controller. So directly, I will not be able to connect. How I will be able to connect then? I need to connect to that jump server. And then whatever the services are running behind this server, I will be able to connect. I will be able to access them. So this is what is actually happening in your organization also, that whatever the services are running behind the relay PC, right? So first of all, you have to connect to that, and then you can access the services of other servers or other whatever the services are running, basically you can say. Okay, sir. One thing more, sir. In Hmm. this server means there is going means there is what we say It is means. kind of VPN, you can say. Okay, okay. Means from means different location means all are accessing it also means yes, Exactly, yes, yes. exactly, And exactly. in this relay PC, what is the concept means in this Windows server? I think 2016 or 2019 is running. Okay, Means many of these means IT engineers are there na, in different locations. They all means they all exactly, are having access to this server. exactly, Yes, yes, exactly, exactly. Now got the concept? yes, sir. Yes, sir. Fine. Okay. Okay, so now next topic is network load balancing cluster, and then we have folder and profiles. Okay, and then Ajay, that will be on another PC. उसी पीसी पे करोगे तो क्या फायदा करने का डीएससीपी फेल ओवर? जब पूरा सर्वर ही फेल हो गया आपका, तो वो फेल ओवर भी कैसे काम करेगा, राइट? तो जो भी फेल ओवर आप कॉन्फ़िगर करोगे वो आप डिफरेंट सर्वर पे करोगे कॉन्फ़िगर, ठीक है? Okay, then type of trust we have, right? Now if let's suppose two companies are getting merged, अभी ये L&T and Mindtree merge हुआ है, right? अब शायद इसको LT Mindtree कुछ ऐसा बोलता है, I'm not sure what's the exact name, ठीक है? तो अब दोनों कंपनी का अपना एक डोमेन कंट्रोलर होगा, ठीक है? अब जो दोनों कंपनी के जो यूजर्स हैं, they want to access the services of each other. They want to get the access of the file servers of each other. Then in that case, I need to set up the trust. तो दो कंपनी के बीच में, दो फॉरेस्ट के बीच में मुझे ट्रस्ट सेटअप करना पड़ेगा, एंड देन आई विल बी एबल टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ ईच अदर. मींस एलएनटी वाले माइंट्री की सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे एंड माइंट्री वाले एलएनटी की सर्विस एक्सेस कर पाएंगे. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट? अब वो कैसे कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, बट इट इज एक्चुअली वी हैव टू डू, ठीक है? एंड देन नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट. NAT is basically a networking topic, right? But still we are going to cover in it because server also can act as a router. Because देखो, हम VPN भी सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है? हम राउटिंग भी कॉन्फ़िगर करेंगे सर्वर पे, हम नेटिंग भी सर्वर पे कॉन्फ़िगर करेंगे. Because server has a capability to serve or to work as a router. ठीक है? अब पूरा राउटर की तो प्रॉपर्टीज नहीं होंगी उसके पास, बट स्टिल इनिशियली वी कैन यूज इट. ठीक है? तो नेटिंग क्या करेगा, नेटिंग आपकी पब्लिक रिक्वेस्ट को प्राइवेट में चेंज करेगा एंड प्राइवेट को पब्लिक में चेंज करेगा, राइट? अब देखो कंपनी में अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, राइट, सो यू हैव टू गेट द आईपी, पब्लिक आईपी फ्रॉम योर आईएसपी.
ठीक है, अब मेरे पास अगर 10,000 सिस्टम है, 10,000 सिस्टम्स है, राइट, सो इन दैट केस क्या मुझे उन 10,000 सिस्टम्स के लिए आईपी बाय करना पड़ेगा एएसपी से, पब्लिक आईपी? नॉट ऑब्वियसली, राइट। मेरा तो कॉस्ट ही, नेटवर्क का ही कॉस्ट महीने का चला जाएगा आराम से 4-5 करोड़, राइट, क्योंकि सी आईपी इज अ डिफरेंट पार्ट, बट स्टिल मैं लीज लाइन भी लूंगा, ठीक है, मैं उसका बैकअप भी प्लान करूंगा, मुझे 3-4 नेटवर्क भी चाहिए होंगे, ठीक है, तब वो मिलके में भी इतना कॉस्ट करें हमें, ठीक है। बट मैं नेटिंग के थ्रू मैं क्या कर सकता हूं, अपनी एक प्राइवेट आईपी को, सॉरी, अपनी एक पब्लिक आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करा सकता हूं मल्टीपल प्राइवेट आईपीज में, सो दैट वो प्राइवेट आईपी वाले इंटरनेट एक्सेस कर पाए अपने डिवाइसेस पे। देखो, सर प्राइवेट आईपी पे कभी भी इंटरनेट एक्सेसिबल हाय नहीं सर होता। जस्ट अ सेकेंड, प्राइवेट आईपी पे कभी भी इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं होता, ठीक है। अगर अभी भी आप भी अपने लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे चेक करोगे तो आपको प्राइवेट आईपी मिल रहा होगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बट आपको प्राइवेट आईपी मिल रहा है, राइट, स्टिल आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हो, स्टिल आप कनेक्टेड हो अभी इंटरनेट से। तो ये कैसे हो रहा है? दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ नेट। नेट कॉन्फ़िगर है आपके राउटर्स पे। कभी अगर टाइम मिले अपने राउटर पे लॉग इन करो, यू विल बी एबल टू गेट इट, ठीक है। और वहीं पे आपको आपके राउटर पे ही डीएचसीपी स्कोप भी मिल जाएगा, आईपी रेंज जो डिफाइंड है आपके राउटर सर पे, आप ये वो तो भी check कनेक्ट हो रहा है सर, ये तो कनेक्ट हो रहा है तो आईएसपी के थ्रू से, उसके बाद जाके हम लोग आईएसपी के थ्रू से जो मॉडेम या राउटर को हम लोगों ने लैपटॉप में कनेक्ट किया है उसके थ्रू से हम लोग तो बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपके राउटर पे वो नेटिंग कॉन्फ़िगर्ड है ना। मीटिंग कॉन्फ़िगर है, हाँ। ओके, अभी आप आईपी चेक करो, देखो अगर मैं अभी अपनी आईपी चेक करता हूँ, हाँ तो आईपी चेक करने से मेरे को शो करेगा कि आपका राउटर का आईपी शो करेगा। अगर आईपी कॉन्फ़िग देता हूँ सी सो सी माय पब्लिक आईपी इज दिस वन, जो मेरे आईएसपी ने मुझे दिया हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं अपने डिवाइस पे आईपी चेक करूंगा, या मैं अगर यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग मारता हूँ, it would be something Ethernet adapter VMnet 1. I am using multiple network adapters basically. VMnet 8. Okay, what I'll do now? Let me open my settings. See, IPv4. I'm getting 1 and 2, 168, 234.57. This is a private range, right? But because of this netting, I am able to connect with you. I'm able to use internet on this machine, right? So how to do it? We are going to configure the net in our servers. Okay. And then file and print management. हेलो Now let's suppose you have one network printer, हेलो right? Yes, Gauri Shankar. हाँ सर, मुझे एक डाउट क्या है कि आप बोला है प्राइवेट आईपी से कन्वर्ट होकर नेट में जाएगा करके बोला है, ठीक है। वो तो पब्लिक से हाँ हाँ, प्राइवेट से राउटर में जाएगा, हम जो नेटिंग राउटिंग में करके रखे तो वो कन्वर्ट करके पब्लिक आईपी से हमको कम्युनिकेशन के लिए हेल्प कर रहा है, वो ठीक है। आप बोला है, मेरा क्या Exactly. डाउट क्या है कि हमारा मोबाइल में कैसे वो हो रहा है, हर एक मतलब हम अभी जियो सिम यूज कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जियो सिम मतलब वो हमको दे रहा है पब्लिक आईपी दे रहा है, और कैसे है सर, हम कैसे इंटरनेट यूज कर रहे हैं थ्रू फोन में? फोन में जो आप ये अपना 4G and 5G यूज कर पा रहे हो, राइट? हाँ तो जिस सर्विसेज पे आप कनेक्टेड हो, राइट, उन्होंने अपने एंड पे कॉन्फ़िगर किया हुआ है, उनके अपने एरिया का एक सेटअप है, उस एरिया पे उन्होंने नेटिंग कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है। हर एक मतलब लोकेशन का अपना ये एक सारा सेटअप है। वो टावर में होगा, हाँ, हर वो जो एरिया का हम अपना एक जियो वाले लोकेशन। जियो वाले वो उनका जियो टावर में नियरेस्ट हम रहते हैं, वो टावर में वो एग्जैक्टली, नेटिंग करके रखा एग्जैक्टली, होगा। एग्जैक्टली, अच्छा एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, वो टावर में जितना लोग कनेक्टेड है
उतना लॉन्ग का वो आईपी से कन्वर्ट होके जाएगा, फिर Exactly, उसी से exactly, होगा। अच्छा अच्छा, exactly, ठीक है exactly. थैंक यू Okay. Yeah. सर हेलो। Yes, please. सर जैसे हम अभी जो है ना एयरटेल का राउटर यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उससे कुछ वेबसाइट खोलते हैं तो वो नहीं खुलता है, लेकिन वही अगर मोबाइल के डाटा से खोलते हैं तो खुल जाता है, ऐसा क्यों सर? तो आई ब्लॉक तो नहीं किया हुआ आपने? राउटर पे जाके चेक करो, यूआरएल ब्लॉक ना कर रखा हो आपने। नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं है। वेबसाइट कौन सी है? कैसा? कौन सी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो? नहीं नहीं, जैसे अभी ये आपका नेटवर्किंग का खोल रहे थे ना, तो वो नॉट रीचेबल लिख दे रहा था, लेकिन वही अगर मोबाइल के नेट से खोलते तो वो खुल रहा था। मे बी यूआरएल, एक बार यूआरएल चेक करो, ठीक है? यूआरएल भेजो मुझे चैट पे, आई विल ट्राई। ओके ओके सर। okay, so file and print management. So you want to configure the file sharing, right? And you want the print management services. Like we used to have a network printer in the organization, right? So we want that network printer should connect to each and every device of our organization. Okay, so in that case we have to configure the print server. Okay, along with it you can configure scanner also, so that if you want to scan a particular any document, so it will be available on your server location and you'll be able to get the data, you will be able to get the scan document basically. ठीक है, उसके बाद हमारे पास VPN है, virtual private network. VPN with network policy server, where actually we are going to make sure that our VPN should be secured every time. Okay, then we have VPN with radius server. Radius server, what will do? Now let's suppose I have multiple VPNs in the environment, I want to manage it from a single server. So for that I need to configure the radius server, right? So that whatever the VPN servers are connected to the radius, so I will be able to manage them from my radius server itself. ठीक है, फिर है हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, RDS, जहां पर आप अपने सिस्टम्स को रिमोट पे लेते हो एंड कोई आप एक एप्लीकेशन सेंट्रली डाल देते हो अपने सर्वर पे, ठीक है? और नंबर ऑफ यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सेस करते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड RDS. Then data deduplication, BitLocker, file server resource manager. So these are basically that file servers topic under which we can configure that data deduplication, then BitLocker, then file server resource manager, and then storage. There are multiple type of storage, SAN, NAS. Okay, storage devices basically there are. So we are going to talk about that. Then FSMO roles. This is the major thing. Again, if you're going for the interview for system admin, right? In that case, they are going to ask what is FSMO rules, right? Then shadow copies, DFS, right? Distributed file server, and then replication and namespace. Then WSUS patching. This is also the major thing. In infrastructure, you have to make sure your devices should be up to date. Okay, so how we can make it sure? We can do it through the WSUS. So from WSUS server, we can push the patches to our number of machines and we can make them up to date. No internet is needed, right? Then FSMO role seize and transfer. Now let's suppose my primary domain controller is down. Then in that case, I have to make one more server, one more primary domain controller. So no need to configure it from very scratch, right? What we can do, we can just transfer the FSMO roles, because domain controller is purely based on the FSMO roles only. There are 5 types of FSMO roles, right? So whatever the roles are there, they have their own responsibilities. Okay, so now let's suppose if any of my domain controller is down, in that case I need to make a new domain controller. So what I can do, I can just transfer the roles. So we have 2 methods to transfer, that is seize in case I'm not able to communicate with the domain controller, and transfer if I am able to communicate, and then I'm going to transfer the roles. ठीक है, जहां मैं बात नहीं कर पा रहा हूं सर्वर से, डोमेन कंट्रोलर से, वहां पे मैं फोर्सफुली मेथड यूज करूंगा जिसको बोलते हैं सीज मेथड, ठीक है? और जहां मैं बात कर पा रहा हूं वहां पे कोई भी इश्यू नहीं है, देन इन दैट केस आई कैन जस्ट यूज द ट्रांसफर मेथड, ठीक है?
फिर हमारे पास है एडी माइग्रेशन और अपग्रेडेशन। अब लेट्स सपोज, देखो आपको आपने सुना भी होगा, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी 2012 R2 पे काम कर रही है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम 2012 R2 इज अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली, ठीक है। जैसे हमारा विंडोज 10 है, विंडोज 11 है, वैसे ही सर्वर 2012, सर्वर 2016, सर्वर 2019 और जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज 2022, ठीक है। और अब माइक्रोसॉफ्ट ने एक नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि अक्टूबर के बाद, मे बी 10th अक्टूबर के बाद दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट 2012 R2। जैसे उन्होंने विंडोज 7 का सपोर्ट खत्म करा, राइट, वैसे दे आर गोइंग टू stop the support for Windows 2012 R2 also, ठीक है। तो उस केस में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ सिस्टम एडमिन, कि हमें उन सर्वर्स को अपग्रेड करना है, ठीक है। अब डीसी मेरा ऑलरेडी मान लो 2012 पे चल रहा है, ठीक है, और ऑब्वियसली डीसी इज अ क्रिटिकल सर्विस, राइट। मैं विदाउट एनी डाउन टाइम आई कैन अपग्रेड इट टू द लेटेस्ट वर्जन। हाँ, थोड़ा बहुत डाउन टाइम इट विल बी नीडेड, जितना थोड़ा बहुत ट्रांसफर हो रहा है डेटा, थोड़ा बहुत टाइम चाहिए रहेगा, राइट, बट स्टिल मेरी सर्विसेज ज्यादा इंपैक्ट नहीं होंगी। तो उसमें क्या करूंगा मैं, उसको माइग्रेट कर दूंगा, उसको अपग्रेड कर दूंगा 2012 से 2019 में या फिर 2022 में, जो भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये हम प्रैक्टिकली इस टॉपिक में देखेंगे। देन एडीएफएस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, सिंगल साइन ऑन सुना है, एसएसओ। यस सर। आप जीरा पे काम करते हो, जीरा एक टूल, राइट। आप मल्टीपल आप ऑफिस 365 पे अकाउंट बना के ईमेल आईडी आपकी कंपनी की बनती है, राइट, बट स्टिल आप उस पे लॉगिन कर पाते हो, ऑफिस आउटलुक पे लॉगिन कर पाते हो, माइक्रोसॉफ्ट पे लॉगिन कर पाते हो। तो वो क्या होता है, वो ट्रस्ट बना होता है, फेडरेशन ट्रस्ट बना होता है। अब देखो, मैं अगर जीरा पे लॉगिन करता हूं, तो मैं जीरा पे लॉगिन, आई कैन लॉगिन विद माय कंपनी ईमेल अकाउंट, मुझे जीरा पे अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट हाउ आई एम एबल टू लॉग इन, मैं अपनी कंपनी की ईमेल आईडी से वहां पे कैसे लॉग इन कर पा रहा हूँ विदाउट एनी कॉन्फ़िगरेशन, बैकएंड पे कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। सो द कॉन्फ़िगरेशन इज ओनली विद एडीएफएस, मुझे फेडरेशन सर्विसेज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी, एंड देन ओनली आई विल बी एबल टू यूज सिंगल साइन ऑन एसएसओ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एडीपी टूल होता है एक, जहां पे हमारी सैलरी स्लिप्स एंड ऑल आती हैं, राइट। तो उसमें भी आप अपनी कंपनी ईमेल आईडी से लॉग इन कर लेते हो। आईडी तो आइडियली तो उसमें ऐसा होना चाहिए ना, user1@adp.com, बट आप तो अपनी कंपनी से लॉगिन कर पाते हो, कंपनी के ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर पाते हो। सो वो कैसे हो रहा है, क्योंकि दोनों कंपनी के बीच में फेडरेशन ट्रस्ट कॉन्फ़िगर्ड है, दैट इज व्हाई यू आर एबल टू यूज एसएसओ, ठीक है। सो दिस वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर इन ADFS. Then backup, this is also a major topic, how to take the backup of your servers, how to make a schedule of your backup, how to restore your backup. Okay, so this we are going to talk about in backup topic. Then we have WDS, Windows Deployment Services. Initially when I started the class, I was talking about कि आप नेटवर्क के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइसेस में। वो कैसे हो रहा है, WDS के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर आप चाहते हो, जब भी आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्ड कर रहे हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, सो यू वांट उसमें कुछ बेसिक एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए, आपको मैन्युअली इंस्टॉल ना करनी पड़े, ठीक है। तो उसके लिए वी हैव sysprep मेथड, ठीक है। सो थ्रू sysprep वी कैन जस्ट मेक अ इमेज, ठीक है, we can make a image and that image can be deployed to each and every device of the organization. So based on that image, whatever the whatever the tools are installed onto that image, so all the devices will be able to get that tools, no need to install the tools manually, okay. So that is sysprep. Then RAID configuration, it is also a storage topic, redundant array of independent disk, आपने सुना होगा RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 1 plus 0. Okay, so that also we are going to talk about. Then nano server, nano server is not widely used because it is available in 2016 only, 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम में ही अवेलेबल है ये, ठीक है। सो स्टिल इफ नीडेड we can configure it,
ठीक है. Then AD sites and services, then IFM install from media, then IPAM IP address access management, then failover in file server. You want to make sure high availability of your file server. ठीक है. So in that case we have to configure the failover in file server. ऊपर हमने क्या कॉन्फ़िगर किया था? failover in DHCP. ठीक है. अब ये ऑप्शन है failover in file server. तो ये वो टॉपिक्स हैं सारे जो आपकी कंपनीज में यूज होते हैं, जो सर्विसेज आपकी कंपनीज में यूज होती हैं. ये 45 टॉपिक्स जो आपको दिख रहे हैं, इट इज टोटली बेस्ड ऑन द सर्विसेज दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्टिवली यूजिंग दीज सर्विसेज. ठीक है. देन डीएनएस, इट इज आल्सो अ मेजर टॉपिक. हाउ डीएनएस वर्क्स, how to make the entries in DNS, how to configure forward lookup zone, how to configure reverse lookup zones, how to add host records onto it. Okay, so this we'll talk about in DNS. Then forest and domain function level, then Active Directory certificate services, then NIC teaming, and then last but not the least, it is PowerShell. And additionally, whatever the topics will be there, definitely these are the topics I have prepared for this MCSA. But let's suppose if there is some additional topic, like we have one called I forgot, admin center, AD admin center. Okay, so these are some or few are also there, so we are going to discuss about that also. Harish, it will be shared by the networking team itself when you are going to enroll it. Okay, so you will get the URLs that how you can join the classroom and all. Okay. Hello, sir. Okay. Yes, please. Classes are in English or Hindi? One student said they purely in class are 100% in class in English, but today you will. I think there's some question So Sheikh, answered in Hindi. yeah, sure, Sheikh. For what we will do now, we will just segregate, right? So we'll see how we can work on it, right? Don't worry. But This that's is why our I demand him responsibility. to Manakaran for I don't know Hindi. Okay, That's the Sheikh, problem. don't worry. We will segregate and we will plan accordingly. Okay. Sure. Tomorrow have the classes? I think it would be from Monday. Okay. The regular classes will be from Monday. Okay, thank you. Yeah. Sir, one question. Yes, please. Yes, sir, means is there any topic of this SCCM and this 365? Sushant, SCCM is purely a different topic, Okay. right? And we are running batch with SCCM also. Okay, sir, can you? See, let me tell you. See, this is the module that the topics I have discussed. It is going to take around 50 plus hours. Okay, and SCCM, it is a course. Again, it is a topic which is going to take 40 plus hours. If you want to enroll for SCCM, or even in between, whenever we will get time, I am going to introduce about SCCM also, Intunes also. Okay, so whenever you are interested, so you can enroll in SCCM or Office 365 or Intunes batch. Okay. Hello, sir, one question. Okay. Yeah. So if you want to see, let me show you the console that I'm already running one SCCM batch. So let me show you the configuration or how SCCM works. Okay. Can you have difference between the SCCM and the MS Tune? What's the difference? Yes, it is a different batch. Do you provide MS Tune also? Yes, Intunes and SCCM both, and plus Office 365. Okay. Okay, so this is one more server, and now you can say this is the jump server, right? So from this jump server, I can access the services which are running behind it. Okay, so now what I did is on this server, I configured Hyper-V, right? And on Hyper-V, I configured 4 virtual machines. One is my primary site server. See, there is primary site, secondary site. So this I will explain later on, or maybe in mid of our MCSA batch, I will explain these things. So if you guys are interested, you can go for SCCM also, right? Then, so we have to configure primary site. Sorry. Sorry for interfering, but one Yes, thing I please. can ask you, sir, how to download this software? Which software?
is a virtual machine have my machine, but is a Hyper V manager that machine how to download? So you have Windows 10 Pro in your laptop or enterprise version in your laptop? Yeah, is because I already make a practice in Linux in my virtual machine. Okay. So how? So you want Hyper-V, right, at the end? Yes. So how? Okay, don't worry. So what you need to do, go to your system, right, and go to uh Have any link? yeah, link. No, link is not needed. So what I will do now, whenever you're just going to join the class over there also, I will give you one script. So you that script you have to run in your laptop, and you will be able to see Hyper-V. Okay. I will share that script once you will be in the class. Okay. Okay, Ramesh. Okay. So these are 4 servers. See, this is why the knowledge is needed of domain controllers or the database servers or the servers basically. Because in order to learn SCCM also, right, we have to configure domain controller. We have to configure group policies, right? So that is why MCSA is a foundation. Is a foundation, right? First, if your foundation, if your base is strong, then in that case, you can learn SCCM, you can learn Azure, you can learn AWS, right? Okay. Anurag, what topic you need to understand, just do let me know. I'll explain it. But before that, I'm just going to show that how SCCM console looks like. See, so this is my primary site server where actually my SCCM is configured, right? So I need to connect the system. So this one is my system. Let me take a console of it. See, so this is the SCCM console where actually you can manage under primary site. Under primary site, we can manage 1,75,000 devices. And from where we will get the information of the devices? That is through our domain controller. Okay, so that is why again MCSA is the foundation. Okay, so if I'm going to assets and compliance and I'm going to devices, so I will be able to see all the devices that are running now, right? And if I want to push any software, if I need to push any update, or if let's suppose this client is running with Windows 10 and I want to upgrade it to Windows 11, so everything I can do it from this console. Sir, this one is a remote computer, no? Yeah, this is a remote. This is a server where it is actually configured in networking data center. Yeah, so because we are Okay. using. No, you are using a network rack server basically, right? But this is a dedicated server which is assigned to me. I am using it. Okay. Now, users, you will be able to see all the users, which and all users are going to be in your domain controller, in your Active Directory. Everything you will be able to see here regarding users, groups, right? Organizational units, everything you will be able to see. But this is the next part. So this is the next, basically you can say this is the next path after MCSA. If you want to grow, okay, even if you are going to Naukri portal, you will be able to see multiple roles of SCCM administrator. But in that SCCM administrator, they want the people who has the knowledge of servers, who has the knowledge of group policies, who has the knowledge of these all services like file servers and all, who has the knowledge of patching, who has the knowledge of WDS, deployment services, Windows deployment services, right? So this is next part basically. What I would suggest you to go for MCSA first, right? And then you can go for SCCM plus Intunes, and then you can go for cloud, that is Azure 104 or AWS, whatever you want to work on. I'm Azure certified, so I will suggest you for Azure only. Okay, but choice is yours and you can go. Now you have any query?
Hi, sir. If I enroll with SCCM, it means it will include the MS Intune also. It will include Intunes also. Yes. Okay. 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 So let me tell you one difference between Intunes and SCCM. See, the things you are able to manage through SCCM, same things you can do it through Intunes also. So do you know the major difference between both these things? Yes, sir. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Sir, what is the Yes. difference that you are telling? Yeah, you knows about? No, sir. No, I don't know, No, sir. no, I I don't want. know. Okay, okay, I thought you know. Okay, so the major difference is this Intunes, this SCCM, you have to configure in your own data center. And Intunes is totally cloud-based tool. No need to set up database, no need to set up SCCM server, no need to set up domain controller. It is totally a cloud-based tool. You have to just create your account on Intunes portal, and you have to, yes, one thing we have to do, we have to synchronize our on-prem AD to Active Directory AD, so that whatever the users we have in the on-prem, so they will also be able to synchronize with my Intunes account. Okay, so this is the major difference. It is, you can configure in your on-prem environment, and Intunes is totally a cloud-based tool. Right? Slowly companies are moving on to Intunes as well, but still SCCM is in the environment. SCCM still 60 to 70% companies are on SCCM. They are using Intunes also, because see, with Intunes we can manage the mobile devices also, the Android devices also, the Mac devices also. Okay, that is why Intunes is there. Sir, I have one doubt. Yes, please. Sir, as you said that SCCM is only for laptop. In that, what in that Intune is only for mobile device. Like that you are telling. Is it right? Not mobile device. We can manage laptops also. I'm just Okay. giving one example, basically, right? Okay. We can manage. I told that we can manage Android, Mac OS, then Windows OS also we can manage. Okay. Okay. Hello, sir. I have a question. Yes, please. Sir, dump system how works, sir? Jump. Dump That dump is jump. system. What dump dump sir. system? सर जैसे रेलवे वगैरह में यूज होता है ना, जिसमें सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, एक जस्ट स्क्रीन रहती है जिसमें एक ब्राउजर रहता है. Oh, okay. हेलो. That is nowadays it is called as autopilot also. ठीक है. उसमें क्या होता है, उसमें आपको जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मैं ऑटो पायलट की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं आपकी क्वेरी की रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ. तो उसमें क्या होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेंट्रल किसी सर्वर पे पड़ा होता है. ठीक है. और आपकी जो मशीन है, आपकी जो लैपटॉप्स है, वहां पे बस उसकी एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दी जाती है. आप उस एप्लीकेशन को रन कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल नॉट बी एबल टू रन एनीथिंग ऑन टू दैट सिस्टम. ऐसा ही होता है. जी सर. मतलब वहाँ हाँ. मुझे सर सीपीयू की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे बस नहीं एक है वो, बिल्कुल. वो सीपीयू कहाँ है, देखो, रिक्वायरमेंट तो है ना, अगर किसी भी आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, एक ठीक है, तो सेंट्रलाइज रहेगा रिक्वायरमेंट सर. तो चाहिए तो है ना, राइट. हाँ तो वो एक सेंट्रल एक सीपीयू डिफाइंड है उनके लिए. तो वो उस सीपीयू, उस सर्वर का, बेसिकली यू कैन से उस सेंट्रल सर्वर का सीपीयू यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन जी रन सर. करने के लिए. जी सर. ओके. तो ये एक पार्ट है सर इसमें, इसको सर. इसका जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता जरूरत है, राइट. बट यस, यू कैन यूज आरडीएस ऑन दैट केस. अगर आप आरडीएस के थ्रू ये काम कर सकते हैं हम लोग. सर मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरे इंस्टीट्यूट में 10 अकाउंट यूजर्स है. उनका वर्क ओनली एक वेब एप्लीकेशन चलाना होता है, जिसके लिए और अदर कोई वर्क नहीं होता है. तो वो एक ओके. ब्राउज़र रहता है. तो मैं चाह रहा हूँ कि रिसोर्स को बचाने के लिए मैं सारे सीपीयू को यूज़ ना करके, मतलब अलग मैं डिवाइस को आपको ये यूज़. आरडीएस के थ्रू करके दे दूंगा. ओके, वो इसमें है सर. बिल्कुल है, आरडीएस तो मैंने बताया ना टॉपिक. ओके, और उनको मैं आपको सीपीयू. वो एप्लीकेशन आरडीएस के थ्रू करा दूंगा. ठीक है. तो अब चाहे आप चाहे बिल्कुल मिनिमम एक सिस्टम यूज कर लो. ठीक है. ओके. आप, और जो सीपीयू यूज होगा वो आपके सर्वर का यूज होगा, आपके सिस्टम का यूज नहीं होगा.
ओके हेलो। ठीक है। मतलब रिक्वायरमेंट तो रहेगी, मतलब लोअर हाँ देखो ऑब्वियसली लोअर केस तो चाहिए ना, कुछ तो मीडियम चाहिए ना मुझे उसको रन कराने के लिए, राइट। एप्लीकेशन को रन कराने के लिए कुछ तो मुझे रिमोट पे भी अगर मैं लूंगा, ठीक है, किसी सिस्टम को या किसी एप्लीकेशन को, तो उस कनेक्टिविटी का तो मुझे कुछ पावर चाहिए होगा ना, कंप्यूट पावर चाहिए होगा, ठीक है। सो मिनिमम तो इट विल बी नीडेड। देन एक बार कनेक्ट हो गया, उसके बाद में जो भी काम करेगा आपका यूजर, वो सारा काम उसी सीपीयू पे, उसी का सीपीयू वो यूज करेगा, उसी का हार्ड डिस्क वो यूज करेगा, जो भी डेटा वो स्टोर करेगा वो उसी के हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, लोकल सिस्टम में भी नहीं होगा। वो आपको करके बता दूंगा, ठीक है सर सर इस हाँ जी मैं ये पूछना चाहता था, जो अपना सिलेबस है, राइट, हाँ जी हाँ इस जी। सिलेबस के बेसिस पे हम्म, जो भी कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज, ओके, उनमें हम्म। कौन सी ओपनिंग्स होती है? जैसे सिस्टम एडमिन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, ठीक है। और थोड़ा सा अगर क्लाउड वगैरह कर लेते हो या फिर एससीसीएम कर लेते हो तो आ जाती है एससीसीएम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और एससीसीएम में भी मल्टीपल प्रोफाइल निकल जाती हैं, दैट इज पैकेज डिप्लॉयमेंट, ओएसडी ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्लाउड में अगर थोड़ा एज्योर पढ़ लिया आपने, तो फिर आपकी क्लाउड एडमिन की जॉब आ गई, क्लाउड आर्किटेक्ट की जॉब आ गई, ठीक है। तो ये सब एक बेसिकली सी, ये सब एक रिक्वायरमेंट है अगर आपको क्लाउड तक पहुंचना है, ठीक है। ओके, तो ये सब चीजें रिक्वायर्ड है। सी देखो, कोडिंग हमें नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो नहीं आती, राइट। तो ऑब्वियसली अगर मुझे ग्रो करना है तो मुझे ये टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरा पाथ क्या बनता है, व्हाट आई कैन डू इन दिस केस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू लर्न, दिस इज व्हाट आई डिड, okay, this is what I did. So I joined a company as a desktop support. अब डेस्कटॉप सपोर्ट पे इतना ज्यादा कुछ पैकेज नहीं होता है, 15-20 हजार, दैट्स इट, ठीक है। बट इसके बाद अगर मुझे ग्रो करना है, अगर मुझे आगे करना है कुछ, राइट, सो इन दैट केस व्हाट आई डिड इज आई स्टार्टेड लर्निंग सर्वर्स, दैट इज MCSA, जहां मुझे प्रॉपर एडी का इनसाइट आउट पता लगा पूरा, ठीक है। मुझे जितने भी सर्विसेज, फाइल सर्वर, फेल ओवर सर्वर, डीएचसीपी, वट जितने भी हमने अभी टॉपिक्स डिस्कस किए, मुझे वो सब पता लगा, ठीक है। अब यहाँ भी चलो एक एक्सटेंड पॉइंट तक ही मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, अब आगे भी ग्रो करना है। देन आई डिड एससीसीएम प्लस, एससीसीएम किया, उसके बाद में ओके, उसके बाद में और थोड़ा हाइक मिला, राइट। देन आई स्टार्टेड लर्निंग इंट्यून्स, राइट, प्लस ऑफिस 365 प्लस एक्सचेंज सर्वर। अब तो चलो एक्सचेंज ऑनलाइन हो गया, बट पहले हम लोग एक्सचेंज सर्वर एक प्रॉपर हार्डवेयर पे कॉन्फ़िगर करते थे, ठीक है। तो एक्सचेंज सर्वर, सर मैंने देखा है कि कुछ पोस्ट में नेटवर्क एडमिन की जैसी पोस्ट होती है, तो वो लोग जो है ना SQCL के बारे में पूछते हैं सर, एसक्यूएल, कि इसके बारे SQCL, सॉरी XQL, सॉरी या हाँ, XQL, दैट इज डेटाबेस सर्वर। उसके बारे में भी वो बोलते हैं कि वो भी मालूम होना चाहिए। डेटाबेस में आपको कॉन्फ़िगर करना बता सकता हूँ इन एससीसीएम, यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस सर्वर नहीं है, वी आर नॉट डीबीए, वो एक अलग हाँ तो प्रोफाइल होता है, उसका डेटाबेस माइनस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंट प्रोफाइल। बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि what path you can follow, then you can go with Azure, or you can choose AWS, or you can choose in between, you can learn Linux also. If you want to go with AWS, मीटर का then in रीडिंग that थोड़ी ना case you पड़ can रहा learn है सर, Linux as well. मीटर का रीडिंग तो बढ़ा है ना। Arun, please mute yourself. Okay, Azure, AWS, Linux, and then if needed I can go to DevOps. So this is the whole profile, this is the whole path which I can follow in order to grow in my career. Sir, Yes, please. yeah, you are telling, sir, first you have to complete desktop and server, See, MCSA, this and all. Why? Because why we are studying directly Azure and AWS? Why in that Azure we have
मैं क्या बोल रहा था ना सर, डायरेक्टली हम मजदूर पढ़ाई करने हैं तो ये सारा चीज अंदर आ जाएगा ना सर, हम क्यों ये स्टेप बाय स्टेप जाने कर क्या बोल रहे हैं अजूर अगर आपको अगर आपको एडी के बारे में पता है, ग्रुप पॉलिसीज के बारे में पता है ऑलरेडी, आपको फाइल सर्वर्स के बारे में पता है, सी एज्योर में भी तो आपको फाइल सर्वर कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, ठीक है? ओके तो एक बार में अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, यू ओके डोंट हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, तो यहाँ पर आपकी वो अंडरस्टैंडिंग एकदम क्लियर हो जाती है। अगर आपको लगता है यू कैन गो डायरेक्टली एज्योर, मैं कोई आई एम नॉट पुशिंग यू टू डू इट, राइट? दिस इज जस्ट, आई टोल्ड यू दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स। अब आपने एससीसीएम पे किया, एससीसीएम पे कैसे काम कर लोगे जब आपको पता ही नहीं है कि डीसी कैसे काम कर रहा है, ग्रुप पॉलिसीज कैसे काम कर रही हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर क्या है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्या है, चाइल्ड डोमेन क्यों चाहिए, अगर वो है तो मैं उसको यहाँ पे कैसे ऐड कर सकता हूँ। जब तक मुझे वो कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो मैं कैसे काम करूंगा? ठीक है, वो सारा ये AWS अजूर का अंदर ये भी बताएगा ना सर, ये सारा टॉपिक्स उसका अंदर भी है ना? AWS और एज्योर क्या है, वो कंसोल है एक, ओके जहां पर नंबर ऑफ सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है? अब उन सर्विसेज को ऑब्वियसली, अब कुछ सर्विसेज एडी थोड़ा ना कोई बताएगा आपको एज्योर में, डोमेन कंट्रोलर थोड़ा ना बताएगा एज्योर में आपको कोई, ग्रुप पॉलिसी लगानी थोड़ा ना बताएगा एज्योर में कोई आपको, ओहो समझ रहे हो? ओके ओके तो ये समझे। बेसिक फाउंडेशन चीजें हैं जो चाहिए अभी। मैं नहीं कह रहा, अगर आप खुद से कर सकते हो यू कैन गो डायरेक्टली फॉर एज्योर, यू कैन गो डायरेक्टली फॉर AWS, बट बट जब तक आप ये में सारा कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे। ये अब देखो सारा आप पूरा इंटरव्यू के का लिए जा पूरा रहे हो, सी ओके सी आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हो गौरी शंकर, ठीक है? वहां पर एज्योर के लिए जा रहे हो आप, ठीक है? एज्योर का मतलब ये है कि आपको सर्वर्स एकदम अच्छे से आता है, ठीक है? अब इंटरव्यूअर भी ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा जहां से आपके बेसिक चीजें चेक होंगी। मैंने पूछ लिया आपसे एफएसएम और रोल्स क्या होते हैं, जब तक आपने एडी नहीं पढ़ा ओके आपको एफएसएम और रोल्स आप कैसे जवाब दोगे? अब एफएसएम में 5 रोल्स होते हैं, पांचों में से मैंने आपसे पूछ लिया कि स्कीमा रोल क्या होता है, जब आपको वो पता ही नहीं आप ओके रिस्पॉन्स कैसे करोगे? आप जा तो रहे हो एज्योर के लिए, मैं वही बोल रहा हूँ बार बार, अगर आप एज्योर के लिए भी जा रहे हो इन दैट केस इट इज मेकिंग श्योर कि आपको सर्वर्स की नॉलेज बहुत अच्छे से है, राइट? ठीक है। एज्योर में By भी आप AD you फाइल mean सर्वर्स Active कॉन्फ़िगर Directory ना करोगे। सर, Active Directory Domain Services। हाँ, या आपने बोला AD का यस, मतलब ये आप एक्टिव ये डायरेक्टरी रिफर डोमेन कर रहे हैं कि सर्विसेज, Active Directory यस, Domain Services। एग्जैक्टली ओके एग्जैक्टली 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 ADDS, ओके, यस प्लीज। सर ये नेटवर्किंग में जाने के लिए सर क्या वो टेक्निक वो BCA करना जरूरी है सर? अगर कोई सिंपल जैसे मेरा मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट दैट आई एम सीइंग इन माय ऑर्गेनाइजेशन, लोगों ने बीए करके दे आर डूइंग अ जॉब ऑफ डेवलपर फ्रॉम लास्ट 10 years और दे आर अर्निंग अराउंड 40 plus lakhs राइट नाउ। तो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज मैटर्स, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैटर करता है, बट एक बार अगर आप घुस गए ना, ठीक है, तो ये जी बैकग्राउंड जो पिछले सारे बीए है, बीसीए है, बीकॉम है, ये सब कुछ मतलब नहीं है इसका। एक्चुअली सर ये बोल अभी रहा हूँ बीए, देवर बीए करके एयरपोर्ट घुसा हुआ एक बंदा। सर हेलो। यस प्लीज, हाँ हाँ हाँ, गो एक्चुअली अभी हम देवर एयरपोर्ट पे हूँ सर मैं, यहाँ देवरी पे है, सर्विलेंस का वो पूरा देख देख रहा और यहाँ पे सर्वर लगा हुआ है ओके। इस पे, फिर उससे कुछ और ग्रोथ बिल्कुल MCSA के होगा, थ्रू हो सकता है? बिल्कुल होगा। अभी आप वहां पे सिर्फ सर्वेलेंस में भी आप ये मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे होंगे वहां पे, या फिर कैमरास वगैरह जो इंस्टॉल्ड हैं उनको आप मैनेज कर रहे होंगे उधर, ये लाइक सर, और दिस। यहाँ पे जो डेस्कटॉप वगैरह से है ना, प्रिंटर वगैरह सारे शेयरिंग सब थोड़ा थोड़ा हाँ, कर रहे हैं। चलो आपने वो प्रिंटर आपने जो प्रिंट सर्वर आपने बनाया वो खुद बनाया या ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड था? नहीं नहीं कॉन्फ़िगर था सर, बस हम लोग उसको आपको मेंटेन पता है वो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? वो तो सर एक VLAN के थ्रू किए थे तो VLAN इज डिफरेंट पार्ट यार, दिस इज द नेटवर्क थिंग, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट कि वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे हुआ, आपको पता है? नहीं सर। फिर ये चीज आप यहाँ पे सीखोगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में भी काम कर रहे हो, अब देखो अगर आप SCCM पे भी जाते हो, ठीक है, तो वहां आपको कोई ये थोड़ा ना बोलेगा कि भाई स्क्रैच से कॉन्फ़िगर कर, वहां तो आपको सब कुछ रनिंग मिलेगा,
बट जब तक आपको उसका फाउंडेशन नहीं पता होगा कि SCCM को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, या फिर प्रिंट सर्वर को कॉन्फ़िगर करने के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है, तो कैसे काम होगा? नेक्स्ट कंपनी में किसी में चले जाते हो, बोल दिया आपने कि जी मैंने तो प्रिंट सर्वर पे काम किया है, उसने पूछ लिया कि चल यार मेरे को प्री रिक्विजिट बता, अगर मुझे एक प्रिंट सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे क्या क्या सर्विसेज इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, बता दोगे? नहीं सर। तो ये चीज यहाँ पर होगा, समझ रहे हो? जी सो सर। दिस इज द बेनिफिट, ठीक है? तो सर और हर एक मंडे चीज से से जो कुछ ना कुछ हम सीखते ही हैं, राइट? कुछ भी हम अगर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी अगर कुछ हम लर्निंग, आपको सिर्फ ये समझ के आना है कि मुझे सीखना है, आपको ये नहीं आप समझ के आना कि मुझे आता है, राइट? अगर सीखने के पर्पज से आओगे तो चीजें आपको अलग दिखेंगी। अगर आपको लगता है मुझे आता है और अब आप आ रहे हो, जैसे दैट वाज द क्वेश्चन कि मुझे जब एज्योर में सब कुछ बता ही रहा है तो मुझे वो सब करने की जरूरत क्या है, समझो, राइट? डिफरेंस है दोनों चीजों में, ठीक है? जी सर। यस हेलो सर, हाँ जी, ये पूछना चाहता था, जो भी अपना सिलेबस है उसके रिगार्डिंग हमें स्टडी मटेरियल जो PPTs, होता है, everything it will be there. Okay, ओके for all the PPTs, I am going to create one classroom, Google Classroom, right? तो वहां पर आपको सारे PPTs, these are the PPTs, ओके ठीक है? और उसके बाद मैं बात कर रहा था कि मैं आपको एक बुक दूंगा, दिस इज द बुक, ओके ये पूरा PDF है। देखो, मोस्टली मैं वो सब कवर करूंगा जो हमारे टॉपिक्स में है या जो इस बुक में है, ठीक है? बट एडिशनली आप कुछ पढ़ना चाहते हो तो हर राइट एक टॉपिक का यहाँ पर असाइनमेंट भी है। जैसे आपने DSCP पढ़ लिया, ठीक है? DSCP पढ़ते ही वहां पे उसका एक असाइनमेंट है, साथ साथ वो परफॉर्म करके देख लिया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है? सो ये बुक आई एम गोइंग टू गिव यू। ओके। और सर मैं एक बात ये पूछना देखो, चाहता ये था। पूरे तीनों एग्जाम्स है इसमें। हाँ जी, हाँ, जैसा हमारा भी व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होगा या फिर हमें जो एक्सेस वगैरह करना है या फिर अपना जो एप्लीकेशन है नेटवर्किंग का, वो मुझे फाइंड आउट नहीं हो रहा था प्ले स्टोर पे या फिर iOS में मुझे डालना था, तो मुझे फाइंड नहीं हो रहा है, तो ओके। उसकी लिंक वगैरह होती है या फिर वो कैसे डाउनलोड Don't worry, don't worry. That support team will help you on it. Okay. कर? ओके You can चलेगा। just create a ticket and they will going to help you. ओके, फ्रॉम वेयर कैन आई राइज टिकट? You can go to networking support, NK support. ओके Over there you can do it, or you can just call your mentor also. Okay. ओके, थैंक यू सर। Yeah. So Bhavya, guys, whosoever have any issue related to the support, I'm also sharing you the email address as well. Okay, you can just write down to that email, and my support team will get in touch with you after that. That's great then, Okay, so right? we have only for support we have only email, not WhatsApp. For networking, like you just spoke about support team. For to speak to support team, we have only the channel of emails, not any number. I will be sharing you all the details, like the email first of all, and then my support team will get back to you. Don't worry about that. Understood. Okay, sir. Thank you so much. Because I was wondering what would be the support number. You will Yeah, get it. so they are You will actually get most information. like available on the email, so that will be more convenient. Okay, once the batch actually starts, we will be sharing more of the details related to the support, and like there will be ask portal as well, which Sahitya sir will also be sharing it with you in the coming time. Understood. Understood. Thank you, sir. And guys, we are going to have a community also, right? So wherever, let's suppose if you're facing any kind of issue, so you can drop your queries, right? And whenever I'll be free, definitely I'll try to respond your all the queries. Okay. Sir, do you teach server 2019 or 2016? Whatever you want to work on, I don't have any issue. I can work on 2022 as well, right? Yeah. Okay. Last But Monday, convenient, it's better. Update on is better. Okay, so I think we are good for today, right? So next class probably it would be from Monday, or maybe whatever the class timings and all duration, everything it will be shared by the support team. You will get it from there. And if whenever the class will be there, so I'm going to create a classroom link for you all that is on Google, that is different from the networking portal, right? Where from where you will be able to get this study material and all, and even based on it, based on this topic, whatever could be the interview questions, so I'm going to provide that as well.
Okay. Okay, sir. So there would be around 50 to 60 questions, right, that interviewer can ask. And I believe at the end of this course, you will be able to respond every one of them. Okay. Thank you, sir. Okay, then see you on Monday. Okay. Good Yes, night, sir. everyone. Bye-bye. Take care. Thanks for joining. Thank Good you, night, sir. sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you so much for your time. Thank you so much.